Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to online classes. Myself Maheen Haider, working as SS Chemistry in Divisional Public School and College Sahiwal. Today we are going to discuss class 8 chapter 3 periodic table and properties of periodicity. Modern form of periodic and long form of periodic table are our today's topics. Our learning objectives of this topic are: distinguish between periodic and group in the periodic table, state the periodic law, classify elements into two categories, that is groups and periods, according to the configuration of their outermost electrons, determine the demarcation of the periodic table into S block and P, D, F block elements, explain the shape of the periodic table. Previous knowledge. Before we were proceeding towards our today's lesson, let's have a quick recap of our previous knowledge. As in the previous lesson, we have discussed about substances, that substances are classified into elements and compounds. And what are compounds? Compounds are formed by the chemical combination of atoms of the elements in a fixed ratio. Elements consist of only one type of atoms, and moreover we have also discussed each type of an atom has specific atomic number and mass number, and we have also discussed about ion. What is an ion? An atom or group of atoms having a charge on it, it's called an. As you have seen in the picture, that it is a picture of a scientist called Henry Moseley. In 1910, he discovered atomic number. As we have learned about atomic number in the previous lesson, that atomic number is the sum of the protons present in the nucleus of an atom, and he discovered it as an atomic number. It is he arranged the elements or in the periodic table according to their atomic numbers, and it becomes into a perfect order. Mendeleev also worked on this. As the number of protons increases, the atomic mass should also increases. However, if there are fewer neutrons, it could decrease. It is an idea of Mendeleev, but Mendeleev's idea was based on atomic mass, so Henry put a more comfortable periodic table for us on the basis of their atomic number. Modern periodic table. As we know that in the previous periodic table was was formed on the basis of the atomic mass, which was given by Dmitry Mendeleev. But now modern periodic table was based on atomic number, which was given by Henry Moseley in 1913. एटॉमिक नंबर जैसे कि हम पहले पढ़ कर आए हैं कि ये सम ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है, जबकि एटॉमिक मास जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, देयर सम पे डिपेंड करता है जब हम उनका सम लेते हैं. एटॉमिक मास पे मेंडलीव ने, जैसे कि आप उसकी पिक्चर देख रहे हैं मेंडलीव की, मेंडलीव एक साइंटिस्ट था और उसने इस पे वर्क करना शुरू किया और उसने बहुत सारे एलिमेंट्स को, अराउंड अबाउट 63 एलिमेंट्स ऐसे थे जिसको उसने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास. लेकिन क्योंकि उसके में डिफेक्ट्स प्रेजेंट थे पीरियोडिक टेबल में, ही डिडंट मेंशन सम ऑफ द एलिमेंट्स, उनके कुछ आइसोटॉप्स को प्रॉपर्ली मेंशन आउट नहीं किया, उनको एक्सप्लेन नहीं किया, जिसकी वजह से 1913 के अंदर मॉसले ने एक पीरियोडिक टेबल दिया. दैट पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर एंड दिस इज कॉल्ड द मोर perfect modern periodic table and named as modern periodic table. Atomic number of an element is more fundamental property than atomic masses in two respects. It increases regularly from element to element. It is fixed for every element. Atomic number, atomic mass से ज़्यादा बेहतर fundamental property है क्योंकि ये दो चीज़ों पर depend करती है. ये एक तो ये कि ये हर एलिमेंट में इंक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही इंक्रीज होती जाएगी. जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है. मींस जैसे जैसे हम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में मूव आउट करते जाएंगे उनके एटॉमिक नंबर जो हैं वो 1 by 1 इंक्रीज होते जाएंगे. इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट, मीन्स एटॉमिक नंबर जिस हर एलिमेंट का फिक्स्ड है और ये चेंज नहीं होगा. जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, मीन इट इज फिक्स्ड एंड इट कांट बी चेंज, और ये किसी हम दूसरे एलिमेंट को भी 1 एटॉमिक नंबर अलॉट नहीं कर सकते. सो हमने न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी मोस्ले
As we move on the periodic table जो आपको मैं आपके सामने नजर आ रहा है, तो इसको कुछ हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे जैसे हम पीरियड्स के अंदर मूव करते हैं, हॉरिजॉन्टल रॉज को हम पीरियड कहते हैं और वर्टिकल रॉज को हम ग्रुप्स कहते हैं। जैसे जैसे हम हॉरिजॉन्टल रॉज में मूव कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज होगा उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज आउट होती जाएंगी। जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं हमने उनको एक ग्रुप के अंदर अलॉट कर लिया, और सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है वाले एलिमेंट्स जो है वो ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब ये कि पीरियड के ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, उनकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होंगी। जबकि पीरियड के अंदर जितने जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं प्रॉपर्टीज जो है उनमें चेंज होगा। It was observed that after every eighth element, ये बात ऑब्जर्व की गई कि हर एट्थ एलिमेंट के बाद जो नाइन्थ एलिमेंट होता है उसकी बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट की। जैसे अगर आप फर्स्ट पीरियड के अंदर देखें हाइड्रोजन की सेम प्रॉपर्टीज होंगी एज सोडियम से पोटाशियम, और इवन जितने उनके रो में पीरियड के अंदर एलिमेंट्स है दे ऑलमोस्ट शो देयर सेम प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल sodium had similar properties to lithium. After atomic number 18, every 19 element was showing similar behavior. हर 19वां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट की तरह की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। सो द लॉन्ग रोज ऑफ एलिमेंट्स वर कट इनटू रोज of 8 and 18 elements. So we place them in the pieces of 8 or 18, and above them we also divided them into horizontal and vertical rows as was obtained. Long form of periodic table. The significance of atomic number in the arrangement of elements in the periodic table lies in the fact that as electronic configuration is based upon atomic number. Electronic configuration is basically the number of atoms, a number of electrons present in the outermost shell of an electron. एटम के outermost shell में सबसे बाहर वाले shell में कितने electrons present है ये उसके electronic configuration पे depend करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम सेकंड चैप्टर में वी हैव आल्सो रेड अबाउट इट कि इट इज बेस्ड आल्सो बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। जितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का जितना होगा वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे बेस करता है। सो द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स जो हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर किया इट वाज आल्सो डिपेंड अपॉन द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एज शोज द पीरियोडिसिटी। व्हाट इज पीरियोडिसिटी? Periodicity is the repetition of properties after regular intervals, यानी रेगुलरली प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, बार बार रिपीट होना, दैट इज कॉल्ड periodicity. In the electronic configuration of element that leads to periodicity in their properties. Hence the arrangement of elements based on the electronic configuration created a long form of periodic table. So the electronic configuration is the basic that allows us to arrange the elements and create a long form of periodic table. The horizontal rows of elements in the periodic table are called periods. The elements in periods have continuously increasing atomic number. As we have discussed in the previous slides, atomic number is continuously increasing in the periods due to the changing in electronic configuration along a period. As a result, their properties are continuously changing in the period. The number of valence electrons decide the position in the period. For example, elements which have one electron in their valence shell occupy the leftmost position in the respective period, such as alkali metals. Alkali metals have their one electron in the outermost shell, so we have put them in the first position. Similarly, elements having 8 electrons in their valence shell, such as noble gases, are occupy rightmost position in the respective periodic. The vertical columns in the periodic table are called groups. These groups are numbered from left to right 1 to 18. The elements in the groups do not have continuously increasing number. यहाँ पे continuously atomic number increase नहीं होता है, जबकि periods के अंदर atomic number जो है वो continuously increase होते हैं. That's why groups के अंदर जो है properties remain same, और periods के अंदर क्योंकि वो continuously atomic number change होता है, that is why the properties continuously begin to change. Rather, the atomic number of elements in a group increase with irregular gaps. But the elements of group have similar electronic configuration as we have discussed in the previous slide.
the same number of electrons present in the electronic valence shell. The number of electrons, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एटम के इलेक्ट्रॉनिक outermost shell में जितने electrons present होंगे that is their electronic configuration. For example, first group के element जैसे sodium, lithium, they have one electron in their valence shell, so their atomic number will be 1. Similarly, group 2 elements have 2 electrons in their valence shell. It is why they are placed in the second group. ठीक है, it is the reason due to which जिनके electronic configuration same होगी और elements have जिनकी similar chemical properties होंगी, they are placed in the same groups. Salient features of long form of periodic table. There are some important features that we will discuss about the periodic table. This table consists of 7 horizontal rows called periods. First period consists of only 2 elements, that are hydrogen and helium. Second and third period consist of 8 elements. Fourth and fifth consist of 18 elements. Sixth period has 32 elements, while seventh period has 23 elements and is incomplete. It is yet incomplete as many elements are going to be discovered. Elements of periods show different properties. ये हम पीछे point discuss कर चुके हैं. Because the atomic number gradually increases one by one, that is why the elements of periods show different properties. Where there are 18 vertical columns in the periodic table from 1 to 18 from left to right, which are called groups. The elements of groups show similar chemical properties as we have discussed in the previous slide. के group के अंदर atomic number does not increase gradually, that is why they show similar chemical properties. Elements are also classified into 4 blocks depending upon the type of the subshell which gets the last electron. As you have seen in the diagram, you have seen a periodic table from left to right. अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास total periodic table के अंदर groups जो हैं they are 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ठीक है, and there are 7 periods. 7 periods में से जो lengthinides और actinides आपको bottom पे नजर आ रहे हैं, they are the part of period number 5 and 6. क्योंकि they are space उनकी ज़्यादा है, that is why they are placed at the bottom. और period number 7 is yet incomplete, means many elements are to be discovered. तो फिर वो यहाँ पे हम जैसे जैसे discovered होते जाएंगे वो periodic table का part बनते जाएंगे. इसके अलावा आप देखें तो साइड पे लिखा आ रहा है ऊपर लेफ्ट साइड पे S ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑन द राइट साइड लिखा आ रहा है P ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इन द मिडल उसमें आ रहा है D ब्लॉक एलिमेंट्स और लास्ट पे उनके आ रहा है F ब्लॉक एलिमेंट्स. सो द सबशेल्स की बेसिस पे कि सबशेल कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन कर होते हैं, उनके सबशेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स एटम के प्रेजेंट होते हैं, इस बेसिस पे भी हमने पीरियोडिक टेबल को 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया. On the basis of completion of particular subshell, elements with similar subshells electronic configuration are referred as P block up. And जिन के subshells में same elements present है, means S block में जैसे one element present है तो वो group number 1 और 2 में है, so that is why they are called S block elements. In the same way, group 13 to 18 उनमें जो है वो P ब्लॉक एलिमेंट्स उनको कहा जाता है क्योंकि उनके आउटर मोस्ट जो सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो P ब्लॉक में ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं. जिस तरह उनके सब शेल्स जो हैं वो कंप्लीशन होती जाएगी उस बेसिस पे हमने उनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है. दे आर नेम्ड एज S, P, D and F. Elements of group as shown in the example, elements of group 1 and 2 have valence electrons in S subshell, so they are called S block elements. Elements of group 13 to 18 have their valence electron in P subshell. They are referred as P block element. Similarly, the D block lies between S and P block. As मैंने आपको periodic table के अंदर दिखाया था कि जो बिल्कुल middle में present हैं, they are called D block elements क्योंकि उनके जो valence electrons हैं वो D block subshell के अंदर present होते हैं, thereby they are called D block elements. While F block lies separately, बिल्कुल वो bottom पे present है, at the bottom they are called as F block elements क्योंकि वो actinides और lanthanides they are the continued part of period 4, 5 and 6, so are they separately placed at the bottom and are called as F block elements. Each period consists of 10 groups. हर period के अंदर 10 groups present हैं starting from group 3 to group 12. These are called transition elements.
which we will discuss in the next lesson. Now come upon a quick recap of our today's lesson. In our today's lesson, we have discussed about periods, groups, how they are distinguished from each other in the periodic table. We have also discussed about periodic law, periodicity, the repetition of properties after regular intervals. Moreover, we have classified the elements into groups and periods according to their electronic configuration. In the same way, we have divided the elements into S and P block elements, and we have also discussed their shapes in the periodic table. Now we have an assignment for you which will help you to grab the concept of our today's lesson. Uh, these are present in the MCQ's form. The father of modern periodic table was Mendeleev. Option A. B. Moseley. C. Rutherford. Second MCQ is the number of periods in a periodic table are 5, 6 or 7. Third one is the number of groups in the periodic table are A. 18, B. 19, C is 20. Fourth one is the number of blocks in the periodic table are A 2, B 3 or C 4. At the end, thank you. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.